Hello friends, welcome back to the series of lecture. This is the first lecture of it. This subject, Indian Evidence Act, and I am Advocate Gaurav Singh Adhana. First of all, we see that what is the importance of the Indian Evidence Act. So Indian Evidence Act का importance civil law में भी है और criminal law में भी है. अब जैसे criminal law है तो criminal law में कोई murder हुआ है. Murder की अगर बात करें हम, तो murder के लिए different evidences has to be seen. Like circumstantial evidences, etc. So all those be area be covered by the Indian Evidence Act. उसी तरीके से सिविल लॉ में एडमिशंस वगैरह इस तरीके के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं. इन दैट एरिया द एविडेंस एक्ट वुड अप्लाई. अब पंजाब और हरियाणा में क्वेश्चन आते हैं जो मीन्स में, दैट कुड बी, अगर सिविल का क्वेश्चन है देन दैट वुड बी ऑफ सिविल पार्ट ऑफ द एविडेंस एक्ट. अगर क्रिमिनल का कोई क्वेश्चन है then it would be criminal part of the evidence act. So you have to take care about that. अब अगर हम बुक्स के बारे में देखें, what are the books to be read? There is a book by Sarthi, that is for the starters who are starting. Then Batuklal is for Delhi and Haryana. It is more kind of practical book, practical examples, applied questions are there in this. Then UP, MP, Bihar, Uttarakhand for that Avtar Singh, and Munir also Delhi and Haryana. This is more theoretical kind of book. Then Amer Ali and Woodruff, that is in 4 volumes, this book. Then Ratan Lal, Dheeraj Lal. So you can prefer any of the book. As per sufficiency, this Batuk Lal or Avtar Singh Munir is sufficient. अब पहले बेसिक पॉइंट एविडेंस एक्ट का समझ लीजिए. व्हाट एविडेंस एक्ट इज अबाउट. There is a maxim obvious avi remedium. The meaning of that maxim obvious avi remedium is when there is a right, there is a remedy. If a right is violated, then remedies always be there. So you talks about in the criminal law, you talk about the civil law. Whenever a right is violated, जब भी आपके अधिकारों का violation होगा, there has to be a remedy on that. And how do you have that remedy? अब आपके अधिकारों का अगर हनन हुआ तो उधर रेमेडी चाहिए होगा. अब सपोज देयर इज अ थेफ्ट कमिटेड इन द हाउस. सपोज आपके घर में कोई चोरी हुई है. सपोज देयर इज थेफ्ट कमिटेड इन योर हाउस. सो ऑब्वियसली यू वांट टू सीक रेमेडी. You want that the thief got arrested and convicted and the things would be got back to you. अब उस सब के लिए एक प्रोसेस है. What process? The investigation, entire investigation and all that process. अब उसके लिए एविडेंस कलेक्ट होंगे, गिरफ्तारी होगी एंड सो फोर्थ. और लास्ट में कोर्ट में ट्रायल होगा. लास्ट द एक्यूज्ड विल बी ट्राइड इनटू द कोर्ट, एंड इन द ट्रायल व्हाट एल्स टू बी प्रूव्ड, whether the accused has committed the offense or not. And in order to examine whether he has committed the offense or not, he has to prove evidences into the court. The prosecution has to prove that the accused has committed the offense, and the defense has to prove that the accused is not committed the offense. So ये पूरे trial में, the entire trial is about this only, and it is there the role of evidence come into picture. It is there the evidences are proved or disproved, etc. are done. Collection of evidence is not in it. It is in CRPC. Evidences को कोर्ट में प्रूव करना और उस प्रूव के बेसिस पर जजमेंट देना, दैट इज द मैटर ऑफ एविडेंस एक्ट. दैट इज द complementarity between the CRPC or Indian Evidence Act or the CPC or Indian Evidence Act when we talk about civil, or when we talk about criminal then it is CRPC or Evidence Act. अब जैसे सिविल का एक एग्जांपल लें कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, ए ने सूट कर दिया बी के ऊपर. देन ए हैज टू प्रूव दैट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड बी हैज टू प्रूव दैट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट. So here at the trial stage, the role of the Evidence Act comes into picture, and there also the Evidence Act is complementary with the Contract Act and CPC.
CPC and evidence is a procedure law, so they both complement each other, and these both complement with कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्योंकि जब तक आपका एविडेंस एक्ट और सीपीसी में आपको रेमेडी का प्रोसेस नहीं मिलेगा और चीज़ें प्रूव नहीं होंगी, तब तक आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिकम यूजलेस फॉर यू। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मान लो ये कहता है किसी प्रॉब्लम में कि आपको डैमेजेस मिलेंगे। अब डैमेजेस मिलेंगे कैसे आपको? उसके लिए तो ट्रायल करवाना पड़ेगा, और ट्रायल कहाँ होगा? सीपीसी में होगा, और ट्रायल में एविडेंसेस देने पड़ेंगे। वेयर इट विल लाई? इन द एविडेंस एक्ट। सो दैट इज वेयर द एविडेंस एक्ट प्लेज ए कम्प्लीमेंट्री रोल विद द सीपीसी और द सीआरपीसी एंड विद द सब्सटेंटिव लॉ। अब क्रिमिनल लॉ में सब्सटेंटिव, फॉर एग्जाम्पल आईपीसी और अदर क्रिमिनल लॉ, कोई किसी और अदर क्रिमिनल लॉ में अगर रेमेडी चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल एट्रोसिटीज एक्ट एंड सो फोर्थ। So this obvious ab remedium will be incomplete or be meaningless has there not been any civil procedure or criminal procedure coupled with the law of evidence. Because law of evidence is having the complementarity with the civil law procedure or criminal law procedure along with the respective substantive law in which the remedy is sought out. So write down, law of evidence plays a complementary role with the CPC and the CRPC and also with the substantive law which has been violated. Law of evidence is about the proof and disproof of facts which together go on to decide a case in favor of one of the parties. It is about the facts which have to be proved or disproved in the course of trial in a particular case. It is also about the issue as to who will prove or disprove the fact, and also about how the fact has to be proved or disproved. So you have to appreciate. Suppose A has committed the murder. A has committed the murder and he shall be punished for the offense. अब A ने मर्डर किया है और he shall be punished for the murder. अब A ने उस पर एलिगेशंस है, A ने मर्डर किया है. You cannot directly pick him and say that तुमने मर्डर किया and hang him. You have to first prove that he has committed the murder. अब in order to prove that he has committed a murder, what facts you have to prove? अब उसने ये मर्डर किया है, उसको प्रूव करने के लिए what facts, आपको कौन से फैक्ट्स हैं जो प्रूव करने पड़ेंगे? अब मेन फैक्ट उसमें जो प्रूव करना पड़ेगा आपको, अब सपोज जो मर्डर किया गया है वो बंदूक से किया गया है, बाय गन, बाय एक्ट ऑफ शूटिंग. सो फर्स्ट यू हैव टू प्रूव दैट इट इज हिम हु शॉट अपॉन द विक्टिम. उसने विक्टिम पर, एक्यूज ने विक्टिम पर गोली चलाई. और दूसरा, दैट the accused is having the intention or the required knowledge as per the section 299 or 300. So all those mens rea of IPC, 299, 300 of IPC. So all those mens rea. So two things. Number one, that he caused the death, and number two, he is having the intention of mens rea. Number two, he is having the required mens rea. So these are the two main ingredients you have to prove for section 300 of IPC. But you cannot prove that directly. So for that you have to require a lot many of evidences. Even though if you are having the video recording, then also whether that is fake or genuine, all that has to be proved. If you are having the eyewitness, you have to prove that he is the eyewitness. So other evidences you have to prove that the pistol from which the blood is sought, the pistol is having the fingerprints of the accused. For example, the pistol later on discovered from his possession from the accused. Then some people had shown him running away from the spot where the bullet was sought along with the pistol. So that kind of evidences. Then the bullet was sought close to the chest, near to the heart, or maybe in the head.
That itself shows intention to cause death. So you have to prove all these facts. So the important thing in Evidence Act is what facts you have to prove in a civil matter or a criminal matter. What do you have to prove? You have to prove which are main facts. There are certain facts which are the prime facts, main facts. You have to prove that. For example, in this case, that it is you who shot, and number one you shot, and number two that you are having the intention to kill him. So these two are called main fact or primary fact, that is fact in issue. That is main fact that are in issue. But in order to prove these main fact, you cannot have the direct evidence of these main fact. Or even if you have the direct evidence of these main fact, it is not necessary that the direct evidence is go on to prove the main fact. So you may require a lot many other evidences, which are called circumstantial evidences, and these are what called relevant facts. For example, he is having the motive to kill. A has threatened B that I would kill you, or on the death of B, A is going to get some property. So that constitutes some motive. Or earlier also, A tries to kill B. That constitutes the clear conduct, and so forth. So ये जो facts हैं उनको आप बोलते हो relevant facts. एविडेंस एक्ट में सबसे पहली बात, सिविल हो या क्रिमिनल हो, किन तथ्यों को साबित करना, व्हाट फैक्ट्स हैज टू बी प्रूव्ड, सो दे विल बिकम मेन फैक्ट. सो सिविल हो या क्रिमिनल मैटर हो, किन तथ्यों को साबित करना है, व्हाट फैक्ट्स हैज टू बी प्रूव्ड, दैट विल बिकम मेन फैक्ट, प्राइमरी फैक्ट और फैक्ट इन इशू. अब इन फैक्ट्स को हाउ विल यू प्रूव दोज फैक्ट्स, व्हाट अदर फैक्ट्स यू हैव टू प्रूव. So they will be called the secondary fact or circumstantial evidences. So first thing is what facts has to be proved. Fact in issue and relevant fact. अब यही सारा आपको पढ़ना है आगे. सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 55 तक जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे मोटिव हो, चाहे लास्ट सीन टुगेदर हो, जो भी इस तरीके की चीज़ लिखी हैं वो सब क्या है, it is all about relevant facts. So first thing is what you have to prove. You have to prove a fact. But what fact? Main fact and the secondary fact. So that is called the fact in issue or the relevant fact. Then the next question is who will prove it? Who will prove it? देखो आपको प्रूव करना है या डिसप्रूव करना है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि who will prove or disprove it? And the answer is the party on which the burden of proof lies. तो इधर टॉपिक आ गया बर्डन ऑफ प्रूफ. इधर सेक्शन 101 से स्टार्ट करो और सेक्शन 114 ए तक जाओगे. सो दीज सेक्शंस आर अबाउट द बर्डन ऑफ प्रूफ एंड प्रिजम्पशन रिगार्डिंग द बर्डन ऑफ प्रूफ. सो पहला व्हाट फैक्ट्स टू बी प्रूव, देन दूसरा बर्डन ऑफ प्रूफ, और उसी में है देयर आर सम फैक्ट्स which may and which shall be presumed. There the burden of proof gets shifted. So पहला what facts to be proved, उसी में एक छोटा सा टॉपिक आएगा what facts not need to be proved. कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ऐसे फैक्ट्स जो जुडिशरी नोटिसेबल फैक्ट्स हैं उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती. ऐसे फैक्ट्स जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं सेक्शन 58, ऐसे फैक्ट्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती. और नोटिसेबल फैक्ट्स सेक्शन 56, 57 देन 58, तो इन फैक्ट्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती. 58 में एडमिटेड फैक्ट्स आ जाएंगे. सो देयर आर सर्टेन फैक्ट्स व्हिच रिक्वायर टू बी प्रूव्ड, बट देयर आर ओनली सर्टेन फैक्ट्स व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड. देन हु विल प्रूव इट, द पार्टी और अपॉन विच द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज. बट द बर्डन ऑफ प्रूफ may shift over in evidence where there are presumptions. Burden of proof shifts. Presumptions are I think in 107 to 114A Evidence Act. The kinds of presumptions.
अब तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो हो गया क्या प्रूव करोगे, दूसरा कौन प्रूव करेगा, और उसी में बर्डन ऑफ प्रूफ भी आ गया। अब तीसरा पॉइंट है कैसे प्रूव करेगा, सबसे बड़ा टॉपिक यही है। सो तीसरा जो हाउ टू प्रूव है, इसमें देयर आर टू काइंड्स ऑफ एविडेंसेस। पहला oral evidences where the witness will stand into the court and he will give the evidences. Suppose I have seen someone to do the wrong and I myself stands into the court as witness and give the evidence as witness. और दूसरा I am having some videograph, I am having some photos, I am having some documents. So that is a documentary evidence. So here the comes the topic oral or documentary evidence. How will you prove a fact? Either by giving oral evidence through a witness or by proving some document. So this is what how to prove. अब इसमें witnesses के बहुत सारे टॉपिक होंगे. What are the requirements to be a person to be a witness? Can you compel a person to be a witness? Witness कौन होगा? क्या किसी व्यक्ति को witness बनने के लिए compel कर सकते हैं? So all those topics from section 118 onwards. In one case, how many witnesses can appear? Then the entire process of examination of witnesses. सेक्शन 118 से 165 तक चले जाओ, ये सारे सेक्शंस, विटनेस का एग्जामिनेशन कैसे होगा, उससे किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, किस तरीके के सवाल नहीं पूछे जा सकते, विटनेस को कोरोबरेट करने के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया जा सकता है, कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है कि नहीं, विटनेस मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है कि नहीं, हॉस्टाइल विटनेस कौन होगा. सो ऑल दोज थिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 118 से 131 तक यू विल फाइंड द बेसिक पॉइंट्स ऑन विटनेसेस. इसमें प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस भी आएगा. देन कंपल्सन अपॉन द टू बी अ विटनेस. देन हु कैन बी अ विटनेस, हाउ मेनी विटनेसेस कैन बी देयर, आर देयर एनी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस. फॉर एग्जांपल आई कीप टॉकिंग so many things to a person to whom it is considered that it is a privileged communication. For example, suppose a spouse in their relationship, one says another some things, that is the privileged communication, and it is due to the trust one is saying something to other. And suppose in the some other day one from the spouse get the trust of the some other and give the evidence into the court whether it is admissible or not. So all these things we would talk. So for that the law is the spouse cannot be compelled and cannot be allowed to give evidence of whatever of his or her has communicated during the marriage. जब तक शादी चल रही है तब तक अगर आपने अपने स्पाउस से कोई भी बात करी हो या लिखी हो, उसका एविडेंस वो स्पाउस में से कोई एक नहीं दे सकता, पति या पत्नी. उस तरीके से बहुत सारे ऑफिशियल कम्युनिकेशन है. ऑफिशियल कम्युनिकेशन में जैसे एक ऑफिसर ने दूसरे ऑफिसर से कुछ कहा है, उसका आप एविडेंस नहीं दे सकते हो तब तक जब तक डिपार्टमेंट ने रिटन परमिशन ना दे दी हो. सो दिस ऑल अबाउट विटनेसेस एंड प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन. देन 135 ऑनवर्ड्स इट इज एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस. सो ये सब 118 से लेके 166 तक अबाउट विटनेसेस है. छोटे छोटे उसी में सारे छोटे छोटे टॉपिक्स भी हैं. Then in this topic, whenever you talk about the oral evidence, then it is to be direct evidence. It cannot be hearsay evidence. किसी और ने उसको सुना और मुझसे कहा और मैं उस चीज की गवाही दे रहा हूँ कि that it was happened, बट मैं डायरेक्टली उस चीज को नहीं सुना या फिर डायरेक्ट विटनेस में उस चीज का नहीं हूँ. So such kind of witness is called hearsay evidence. If you have seen or heard directly, then it is admissible into the court. If you have not seen or heard directly, then it is hearsay evidence. So that is section 60. अब documentary evidence पे आ जाओ. अब किसी बात को प्रूव करने के लिए आप डॉक्यूमेंट भी दे सकते हो. अब documentary evidence is of two kind, primary evidence and secondary evidence. Primary evidence documentary is the original document and उसका अगर कोई कॉपी है that is secondary evidence.
So we would see what is primary evidence and what is secondary evidence. कौन से primary कहलाएंगे और कौन से secondary कहलाएंगे. And where the secondary evidence can be given. And will not the court ask me produce the original one. So in certain situation can I justify to the court that the original one is lost, so I am giving the copy. So in certain situations secondary evidence can be allowed to be given. So that is primary or secondary. Primary evidence, documentary evidence can be given and secondary evidence may be allowed to be given. So ये जो सारे sections हैं 61 से 90 तक ये documentary evidence से related हैं. कहाँ पर प्राइमरी एविडेंस दिए जाएंगे, कहाँ पर सेकेंडरी एविडेंस दिए जाएंगे, 61 से 65 तक हैं. उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन का अटेस्टेशन, उसके लिए आगे के सेक्शन 70 ऑनवर्ड्स. फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं जिनको, उनके लिए कुछ प्रिजम्पशन होंगे 74, 81 एक्सेट्रा. वी विल सी ऑल दीज सेक्शंस इन दिस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टॉपिक. फिर उसमें एक टॉपिक देखेंगे एक ही पॉइंट पर, अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और ओरल एविडेंस है तो उसमें कौन सा प्रेफर होगा. सो अगर एक बात है जिसको मैंने देखा है और वही चीज डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में लिखी हुई है, अगर सेम थिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कॉन्ट्राडिक्शन है तो किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा. सो द जनरल रूल इज दैट द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वुड बी गिवन द प्रेफरेंस. 91 92 में क्लियरली लिखा इन सर्टेन केसेस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओनली विल बी अलाउड, इन सर्टेन केसेस oral evidence is not allowed. Then we would see the latent and patent defect. कोई document अगर record हुआ है, there are some defects into the document, तो उसमें दो तरीके के defect होती हैं, latent defect and patent defect. Patent means which is visible on the face of it, something which is visible on the face of it, and latent which is something hidden. So that will you find from section 93. सो 93 से 100 तक लेटेंट पेटेंट डिफेक्ट देखेंगे हम. सेक्शन 6 से लेकर 55 तक, सेक्शन 6 से लेकर 55 तक रिलीवेंट फैक्ट्स हैं आपके. 56 57 जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट्स. 58 जहां पर आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 59 ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. इन बोथ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वुड बी प्रेफर. 60 हियरसे एविडेंस. ओरल एविडेंस वुड बी डायरेक्ट. देन 61 to 66 primary and secondary evidence. 67 onwards till 90 documentary evidence, public document, private document, presumptions. 91 92 oral evidence would be excluded by the documentary evidence in certain cases. 93 onwards the latent and patent defect. 101 till 106 burden of proof. Then 107 till 114a, that is presumptions. 115 16 and 17 estoppel. 118 till 131 who can be a witness, competency of witness. Then 132 can witness can be compelled to give a witness, can witness be compelled to give evidence. Then 133 accomplice evidence. 134 कितने witness दे सकते हैं, how many witnesses, कितने number of witnesses दे सकते हैं, it can be any number अगर they are competent. Then 135 onwards it is about the examination of the witnesses. So 135 onwards about the examination of witnesses. अब उसमें जो important one is 140 141 leading question से related. Then 145 contradiction of cross examination से related. Then 156 से लेकर 153 तक, sorry 146 से लेकर 153 तक, it is all about cross examination of witnesses. Then 154 is about hostile witnesses. Then 157 former statements, former witnesses by the earlier documents. Then 159 till 161 is refreshing of memory. So ये अलग अलग टॉपिक्स हैं, इसको अभी हम लिखेंगे. तो दिस इज ब्रॉडली अबाउट द एविडेंस एक्ट. अब ट्रायल में कोई गलत एविडेंस अलाउड हो गया, गलत विटनेस अलाउड हो गया, या फिर ट्रायल में कोई एक प्रॉपर एविडेंस था, विटनेस था जिसको अलाउड होना चाहिए था पर उसको अलाउड नहीं किया, देन इन दैट केस व्हाट इज द रेमेडी इन अपील और रिवीजन. सो दैट इज दे आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 167. अब मान लो कोई गलत एविडेंस पर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और कोई प्रॉपर एविडेंस था कोर्ट ने अलाउ ही नहीं किया और केस गलत डिसाइड कर दिया. सो कैन यू गेट दैट डिग्री सेट असाइड, दैट इज गिवन इन सेक्शन 167.
जो आपके शुरू के टॉपिक्स हैं, फैक्ट, फैक्ट इन इशू, रिलीवेंट फैक्ट, अगर इनको आप ढंग से समझ जाओगे जो शुरू के टॉपिक्स हैं, तो देन इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द इंडियन एविडेंस एक्ट फॉर यू। और जब आप केसेस पढ़ोगे, केस लॉज पढ़ोगे, तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाउ द एविडेंस एक्ट वुड अप्लाई। सो बेयर एक्ट के साथ साथ केसेस भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गिव आंसर्स इन द इंटरव्यू, बिकॉज द केस लॉज would help you that how a particular provisions were applicable in the evidence act. एविडेंस एक्ट का कोई पर्टिकुलर प्रोविजन किस तरीके से एप्लीकेबल होगा, तो वो केस लॉ से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सो नाउ राइट डाउन द टॉपिक्स which we are going to study in the Indian Evidence Act. So first thing we have to discuss is what is the meaning of fact, fact in issue and relevant fact. इसमें हम सेक्शन 3 पढ़ेंगे एविडेंस एक्ट। सेक्शन 3 में यू विल फाइंड द डेफिनेशन ऑफ द फैक्ट, फैक्ट एंड इशू, रिलेवेंट फैक्ट। अब इसमें थोड़ा सा रेफरेंस लेंगे हम ऑर्डर 14 रूल 1 का, सीपीसी का, जिसमें द वर्ड इशू इन फैक्ट इज रिटन। सो व्हेन वी रीड फैक्ट इन इशू, देन वी हैव टू डिफरेंशिएट इन इशू इन फैक्ट। So we have to differentiate fact in issue and issue of fact. Then next we have to see the concept of relevancy, admissibility and reliability. जो relevancy में as such कोई section नहीं है, but admissibility में है। Section 5, Section 136 and 104. Now the next topic in this is what facts may be proved and what need not to be proved. For this you read section 5 plus section 56 to 58. In this it is judicial noticeable facts, and then what facts need not to be proved in 58. Section 5 read with 56 till 58. Then the next topic is cardinal principles. अब ये शुरू के जो topics हैं that are the more important to understand conceptual wise, because अगर section 6 से start करें और सीधा सीधा पढ़ते जाएं एविडेंस एक्ट को, देन इट वुड लुक मोर सिंपल एंड इजी टू स्टडी द इंडियन एविडेंस एक्ट। बट जो एंगल इन टॉपिक्स को लेकर हम जो शुरुआत में लेके चलेंगे और इस एंगल से जो पढ़ेंगे हम, यू कैन नॉट गो थ्रू दैट एंगल इफ यू स्टडी इन ए रूटीन मैनर। अब इसमें कार्डिनल प्रिंसिपल में फर्स्ट टॉपिक इज रूल ऑफ बेस्ट प्रिंसिपल। रूल ऑफ बेस्ट प्रिंसिपल में बेस्ट एविडेंस, रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस, इसमें सेक्शन 91 92 यू विल लुक। सो कार्डिनल प्रिंसिपल में रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस में सेक्शन 91 92। सो इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा 91 92, इसमें देखेंगे हम एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब जब 91 92 करेंगे हम, तो उसी सीक्वेंस में लेटेंट पेटेंट डिफेक्ट हो जाएगा। अब ये लेटेंट पेटेंट डिफेक्ट कार्डिनल प्रिंसिपल तो नहीं है, बट साथ में कर लेंगे। एंड दिस इज फ्रॉम सेक्शन 93 टू टिल 100। नाउ द नेक्स्ट कार्डिनल प्रिंसिपल इज एक्सक्लूजन ऑफ हियरसे एविडेंस, और ये आपको मिलेगा सेक्शन 60 में। देन यू सी नेक्स्ट कार्डिनल प्रिंसिपल इज एक्सक्लूजन ऑफ सेकेंडरी एविडेंस बाय प्राइमरी एविडेंस। अब इसके लिए आपको 61 से 66 तक देखना पड़ेगा। Then the next topic is special powers of the court. In this section 165 of Indian Evidence Act, इसके साथ हम 311 CRPC का पढ़ेंगे। So these two are complementary provisions. अब CRPC में है कोई provision तो CPC में भी होगा। So in this the order 18 rule 17, order 18 rule 17 और order 16 rule 14 CPC में है। अब उसी सीक्वेंस में हम देखेंगे सेक्शन 313 एंड 315 ऑफ सीआरपीसी। अब इतने टॉपिक्स, आफ्टर ऑल दीज टॉपिक्स वी वुड स्टार्ट टॉपिक वाइज इन सीक्वेंस। सो इन दिस वी वुड स्टार्ट विद सेक्शन 6। सेक्शन 6 से लेकर 55, सेक्शन 55 तक पूरा। इसमें कुछ सेक्शंस जैसे 35 टू 39 सेल्फ स्टडी के लिए हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे इंपॉर्टेंट, बाकी के यू वुड सी इट्स योरसेल्फ।
अब सेक्शन 6 ऑनवर्ड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे सेक्शन 6 में सेम ट्रांजैक्शन वाला पॉइंट है। सेक्शन 7 में जैसे बहुत सारे एक्यूट है, कॉज इफेक्ट एक्सेट्रा। फिर सेक्शन 7 में ही आपका अपॉर्चुनिटी। फिर सेक्शन 7 में ही लास्ट सीन टुगेदर। देन सेक्शन 8 में आपका मोटिव प्रिपरेशन एक्सेट्रा, मोटिव कंडक्ट एंड प्रिपरेशन। देन सेक्शन 9 इज अबाउट रिलेशनशिप एंड सो मेनी थिंग्स। जब हम सेक्शन 9 पढ़ेंगे वी विल रिलेट दैट विद सेक्शन 112 रिगार्डिंग द पैटर्निटी। वहीं पे हम रिलेट करेंगे डीएनए टेस्टिंग से, और वहीं पर ही हम एक्सपर्ट एविडेंस पूरा का पूरा साथ में खत्म करेंगे। So when we discuss section 9, that is something about relationship. Any fact which establish the relationship is the relevant fact. अब इसी के साथ हम 112 करेंगे, डीएनए पैटर्निटी का टॉपिक भी पढ़ेंगे डीएनए टेस्टिंग के लिए। और उसी के साथ एक्सपर्ट एविडेंस सेक्शन 45 to 51 पढ़ेंगे। अब इसमें 48, 49, 50 ये इस टॉपिक में नहीं होगा, वो कहीं और होगा, बट ब्रॉडली we would discuss here only. Then we would discuss section 10. Section 10 is about conspiracy to prove conspiracy. What are the relevant facts to prove the conspiracy? Then we would see section 11. 11 you know it is about alibi. अब इस पर केस लॉज बहुत सारे हैं। Then section 12. 12 relates to damages, और जब हम damages पढ़ेंगे तो इसको हम कैरेक्टर से रिलेट करेंगे। That is from section 52 till 55, जिसमें हम देखेंगे डैमेजेस के असर्टेनमेंट में हाउ फार द कैरेक्टर इज रेलिवेंट। फिर उसके बाद देखेंगे हम सेक्शन 13, 14, 15। जब सेक्शन 13 के साथ सेक्शन 32 के कुछ क्लाउजेस रिलेट करेंगे, 32 क्लाउज 5 एक्सेट्रा, सॉरी 32 क्लाउज 4। देन वी वुड सी सेक्शन 16, उसके साथ 34 देखेंगे हम। अब उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है इम्पोर्टेंट, दैट इज एडमिशंस एंड कन्फेशंस। अब एडमिशंस में हम देखेंगे सेक्शन 17 to 23, देन रेड विद सेक्शन 31, देन कन्फेशंस 24 to 30। और जब हम सेक्शन 30 पढ़ेंगे दैट इज अबाउट कन्फेशन बाय द को-एक्यूज्ड। अब 30 के साथ हम वी विल ऑल्सो सी सेक्शन 133 ऑल्सो। 30 is about the confession by the co-accused and 133 is about the accomplice evidence। और वहीं पर we would see section 114 का illustration number B also। So इसमें देखेंगे confession by the co-accused, accomplice evidence, then presumption given in 114 illustration B। अब इसको करने के बाद एक सेक्शन आएगा सेक्शन 33। मान लो एक दैट इज इम्पोर्टेंट सेक्शन। मान लो एक विटनेस ने बयान दे दिया कोर्ट में और दोबारा उसके बयान की ज़रूरत है लेकिन वो मर चुका है। किसी और केस में उसके बयान की ज़रूरत है लेकिन वो मर चुका है, तो इधर पहले वाले केस में उसका बयान यूज़ किया जा सकता है। सो इन सर्टेन कंडीशंस यस, ऑन सर्टेन कंडीशंस यस, दैट इज सेक्शन 33। देन सेक्शन 32 क्लाउज 1, दैट इज अबाउट डाइंग डिक्लेरेशन। और 32 क्लॉज 1 को हम सेपरेटली देखेंगे, दैट इज डाइंग डिक्लेरेशन। वैसे 7 क्लाउजेज हैं दैट वुड बी कवर्ड बाय द अदर टॉपिक्स। द रिमेनिंग क्लाउज 6 clauses would covered with other topics. The 32 clause 1 में you have to read a lot many of cases. अब after completing this, जब relevant facts में कुछ बच गया, that is previous judgments, that is from section 42 till 44। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है but it is of pair readings। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज बर्डन ऑफ प्रूफ, देन प्रिजम्पशंस। इट इज फ्रॉम 1101 टू 114A। अब इसमें से 113A, 113B, 114 या IPC के साथ हम देख चुके हैं। अब उसके बाद वी वुड सी द टॉपिक विटनेसेस। अब विटनेसेस के बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। अब इनमें से कुछ सब टॉपिक्स आप लिख लो। फर्स्ट वन इज कंपेटेबिलिटी ऑफ विटनेस। कंपेटेबिलिटी ऑफ विटनेस, जो ये कंपेटेबिलिटी ऑफ विटनेसेस में ही डैश करके लिखो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस। देन नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस। जो ये जो फर्स्ट पॉइंट है कंपेटेबिलिटी ऑफ विटनेसेस, इसमें प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन भी लिख लेना और 132 सेक्शन 132। कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस 118, 119 एक्सेट्रा।
प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन 120 ऑन टू 131। इसमें मेनली हम डिस्कस करेंगे हस्बैंड वाइफ का कम्युनिकेशन एंड द लॉयर communication, lawyer client communication. Then the next topic is examination of witnesses by leading question. Leading question पूछे जा सकते हैं कि नहीं witnesses से. That is from section 141 till 143. Then next is cross examination and contradiction. That is from section 145 to 153. Then hostile witnesses, that is in section 154. Then corroboration of witness, that is section 157. Then refreshing memory of witnesses, that is from section 159 till 161. Then section 167, that is ratification of mistake. जो कोर्ट एविडेंस अलाउ करने में गलती करती है और गलत डिसीजन देती है तो उस बेसिस पे क्या जजमेंट को सेट असाइड करा सकते हैं. सो दैट इज 167. So that's it for this lecture. We will continue with the topic studying in detail in the next lecture. So thank you for watching this lecture.